Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new chapter whose name is Our Body. Right? In this chapter we will talk about 2 points that are very important. Right? We will talk about 2 points that are cell and organ system. As well as we will talk about what is our body made of. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है हमारा शरीर, और इसमें हम लोग बात करेंगे सेल और ऑर्गन सिस्टम की। राइट, इसमें हम लोग बात करेंगे सेल और ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, एंड देयर आर 2 points टू बी डिस्कस्ड, सेल एंड ऑर्गन सिस्टम। Organ system. We know about each of them one by one in detail, है ना। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सेल। सो लेट्स वी गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। सेल, it is called कोशिका in Hindi. It is called कोशिका in Hindi. इसको हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं। So now question is, what is cell? So cell is the smallest unit of our life from which all living beings living on earth are made of. Their body are made of cells. सेल वो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे कि सभी जीव जंतुओं का शरीर बना होता है। That's why I am calling it cell is the smallest unit of our life from which all living beings their body are made of. सभी जीव जंतुओं का शरीर, whatever you see in your body, whatever is present in your body, your hand, your leg, your head, your eyes, your brain, your liver, your lungs, your kidney, whatever, all of those are made of cells. सभी का सभी cells का बना होता है। Let's take an example to make it easier to understand. To build a house, to make a house, there is a smallest material is required, and that smallest material is brick. किसी घर को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी चीज क्या चाहिए होती है? तो वो छोटी चीज का नाम है ईंट, ब्रिक चाहिए होता है। Brick is required to build the entire structure of a building. That is the smallest unit of a building. उसी तरह जिस तरह पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज चाहिए होती है ईंट, जिससे कि पूरी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। Just like that, our body requires cells. Our body requires cells to build. So cell is required to build the entire structure of our body. Not our body, even the all living beings living on earth, their body are made of cells. तो सेल ही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे कि हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। So we can write cell is the smallest unit of life from which all living beings, all living things are made of. Right? Cell is the smallest unit of life from which all living things are made of. Right? So cell is the smallest unit from which all living beings their body are made of. सेल ही वो सबसे छोटी इकाई होती है, सेल ही वो सबसे छोटी चीज है जिससे कि हमारा बॉडी, हमारा हैंड मिलके बना होता है। राइट, सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ डज इट लुक लाइक? ये दिखता कैसा है? राइट, सो एक्चुअली इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ सेल. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. They are irregular in shape. Cells का कोई निश्चित आकार नहीं होता है. It's depend on different species of animals or living beings or living things.
इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है. But yes, we can say in term of animals or human beings, we can generalize the shape of cell as round or spherical. वैसे तो सेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हाँ, इनमें जो सेल का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है. आई एम गोइंग टू शो यू. इस तरह का सेल्स होते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इस तरह. सो सेल लुक्स लाइक दिस इन ओनली इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सेल जो होता है वो ऐसे दिखता है. These are cells. So let's talk about its discovery. By whom was cell discovered? तो सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि all living beings are made of cells? Who told that all living beings are made of cells? किसने बताया था? So there was a scientist named Robert Hooke. Robert Hooke. So he is the scientist, the first man who discovered the cell in 1665. इन्होंने खोज किया था 1665 by taking a cork. Cork is a lighter and soft material that comes from outside of a plant. It's the outer layer of a plant that protects the plant from outside. कॉर्क जो होता है वो प्लांट का बाहरी लेयर होता है जो प्लांट को किसी दूसरे बाहरी घात से बचाता है, बाहरी इफेक्ट से बचाता है. सो रॉबर्ट हुक took a cork and he observed that there were many tiny holes rooms that resembled a honeycomb. In a cork, he observed that in a cork there were many tiny holes like rooms that resembled a honeycomb. उन्होंने देखा उस कॉर्क में कि बहुत सारे कमरे टाइप छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, कमरे टाइप, मधुमक्खी के आकार का पूरा, मधुमक्खी का छत्ता जिस तरह होता है उस तरह. एंड ही कॉल्ड देम सेल. और उन्होंने उस मधुमक्खी के आकार का जो छोटे छोटे रूम बने हुए थे, होल्स बने हुए थे, उन्होंने उनका नाम दिया सेल, कोशिका. सो ही इज द फर्स्ट मैन that discovered the cell in 1665 with help of a compound microscope. Compound microscope से कॉर्क को लिया, उसमें देखा कि there were many tiny holes rooms that resembled a honeycomb. एक छत्ती की तरह, एक मधुमक्खी की छत्ती की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था और उन्होंने उसका नाम दिया, it named cells. But that cells were dead cells. वो सभी सेल्स मृत सेल्स थे, मरे हुए सेल्स थे. So he is the scientist that discovered the cell in 1665 with help of a compound microscope. Okay? So this is the brief information about cell. Right? Now we will talk about how is our body made of. हमारा बॉडी किस तरह से बना होता है. Right? What is our body made of? We knew about it. Our body is made of cells, but how? Right? So first of all, we will talk about number of cells present in our human body. पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं. Let's talk about human cells. Right? So a human body consists of 37.2 trillion cells. This is approx data. एक ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. एक ह्यूमन बॉडी में 37.2 trillion cells होते हैं, from which his body is made of, जिससे उसका शरीर बना होता है. Right?
So a human body consists of 37.2 trillion cells. Now we will know about how is our body made of cells. Cells से हमारा body किस तरह बना होता है, right? So we knew that we have 37.2 trillion cells, right? So there are some similar type of cells that makes a group. ठीक है, तो कुछ सेल्स हमारे शरीर के अंदर एक ही तरह के सेल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं इस तरह से. सपोज देयर आर सम सेल्स एंड मेकिंग अ ग्रुप, combining and making a group, right? There are some similar type of cells making a group, and that group is called tissue. और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? टिश्यू, right? Then again some other tissues make a group. Then again some other tissues also make a group. फिर से कुछ और भी इसी तरह के टिश्यूज फिर से एक ग्रुप बनाते हैं. Like that. Now again there is another one. Okay, so in this way, just I am going to show you in graph, है ना. इस तरह से सेल्स पहले ग्रुप बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, और फिर टिश्यू भी आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्गन. क्या बोलते हैं? ऑर्गन मीन्स अंग. द पार्ट ऑफ योर बॉडी. द पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन. तो we knew that some similar type of cells make a group that is called tissue, and then again other tissues make a group that called organ. So this is how our body, the part of our body is made of cells. तो इसी तरह से हम लोग का अंग बनता है, हम लोग का ऑर्गन्स बनता है. पहले सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और फिर वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. So I hope you got it, that how is our part of body made of cells. Okay, so let's understand it through drawing a diagram. First, cells, right? Now we knew that there are 37.2 trillion cells present in our body. Okay, so group of cell make tissue, right? This I told you. Now again group of tissue make organ. Organ means what? Organ means liver. You can say parts of body. Parts of body. Parts of body means what? Liver, heart, brain, kidney, right, etc. So these are some organs. These are some organs, right? So first of all, cells makes a group that's called tissue. Tissues make a group that's called organ system. Sorry, organ. And now some organs make a group. Some organs also make group, right? Group of organs. And that group of organs called organ system. Again, a group of organs called organ system. And finally, the entire structure of our body, we can say, is made of cells. Now again group of organ system form our body. तो हम लोगों ने देखा कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनता है. ऑर्गन्स मीन्स क्या? पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारे शरीर का अंग का ही नाम इंग्लिश में ऑर्गन है, लाइक लिवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी एक्सेट्रा. और फिर कुछ ऑर्गन्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. और फाइनली फिर उसके बाद हमारा बॉडी एक बन जाता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम.
organ system. So till now we knew that what is our body made of and how. Now we are going to talk about organ system. So just I told you, organ system is a group of some organ that works together to perform a particular action. Right? Organ system is a group of some organs, group of organs that works together to perform one action. ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो साथ में काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. Okay, so there are some organ system present in our body, like digestive system, skeletal system, circulatory system, nervous system. So these are some organ system present in our body that perform a particular action, and with the help of them we are alive. Right? ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जिसके वजह से कोई एक पर्टिकुलर एक्शंस को संपूर्ण किया जाता है. Organ system, like if you talk about digestion process, right? If you talk about digestion process, I hope you must know about digestion process. So in the digestion process, there are some organs that works together to complete the process of digestion. Right? So just like that, each organ system has some group of organs that works together to perform one action. Right? तो उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन सिस्टम है जिससे कि हर एक ऑर्गन सिस्टम से एक पर्टिकुलर वर्क होता है. So according this chapter we have to talk about three organ system. In this chapter we have to talk about three organ system: digestive system, circulatory system, and skeletal system. Right? In this chapter we have to talk about only three organ system: digestive system, circulatory system, and skeletal system. So about these organ system we have to talk about in our next lecture. So till now we have to discuss about what we learned today about cells and organ system. Okay, so I'll make you write whatever we learned today. Some facts I'll make you write that you have to also note it. इन ऑर्गन के सिस्टम के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा. राइट? तो फर्स्ट हमने पढ़ा सेल इज द smallest unit our body. Right? Cell is the smallest unit of our body. Next padha, cell was discovered by Robert Hooke in 1665 with compound microscope. Next we learned about cell, that is a human body consists of 37.2 trillion cells. Right? Next, cells can be
cells can be of different shape and size, right? So these are some points we learned about cell. Now organ system, right? Organ system. So organ system, it is group of organs that works together to perform one action, right? To perform one action. Organ is what? Organ means parts of your body, either internal or external. Organ means part of your body, and then some part of your body makes a group that works together to perform one action. So that time that is called organ system, right? So organ system is a group of organs that works together to perform one action. Okay, so in this chapter we have to talk about three organ systems. First one is digestive system, second one is circulatory system, and third one is skeletal system, right? So in our next lecture we will talk about digestive system. Till then you have to revise whatever I taught you, and assignment related to this topic assignment will be sent to you very soon, right? And don't forget to subscribe my channel as well as press the bell icon to get the notifications of my all new videos. Thank you.